Good afternoon, students. How are you all? In the previous lecture, we were discussing about electric current and resistance and the factors on which resistance depends. So we'll do some questions based on that. First, then we will continue the topic. So this is the question. The current through a wire varies with time according to the relation IT equal to I naught plus beta t, where I naught is 4 ampere. It is 4 ampere and beta is 2 ampere per second. The total electrical charge that flows through a cross section of the wire during the time interval from time t equal to 1 second to time t equal to 3 second. So we know what is I is dq by dt. From here we have the relation and we have the dependence of current on the time, and we want to find how much charge is flowing through a cross section during the time interval 1 second to 3 second. So how can you find this? You can write this I dt equal to dq. You want to find the charge, the total electric charge that flows through a cross section in that time interval. So that is a small charge being flown through the cross section, and that is given by I dt in a small time interval. So from time interval 1 second to 3 second, what is the charge? That total charge is 0 to q. So solve it and find. So dq 0 to q is equal to, what is beta? Beta is 2 ampere per second and I naught is 4. So put the values 4 plus 2t dt from 1 to 3. Solve it, tell me the answer. Okay. What is the charge? Total charge? Which option is correct? Okay, 4t plus t square from 1 to 3. So it would be 12 plus 9 minus 4 minus 1. So that would be equal to, from 1 to 3. So 3, 12 plus 9 minus 4 minus 1. So 9 minus 5, 4. 12 plus 4, 16. So that is the total charge. Okay, so that's how to you solve these type of questions.
You are not muted today. Why are you not speaking? A cylindrical uniform wire of resistance R is stretched uniformly so that its length increases by 10%, assuming the density and total mass of the material remains constant. So total mass of the material remains constant and also density is constant. If density is constant, that means volume is also constant. Density is constant, volume is also constant because mass is already constant. So what is volume? Mass upon density. If both are constant, that means volume is also constant during the stretching process. So during the stretching process, the length is increased by 10% and density and mass is constant and volume is also constant during the stretching process. The percentage increase in its electrical resistance is. So this type of question is important type. The percentage increase in its electrical resistances. तो कितना percentage increase हो जाएगा electrical resistance में? We know R is equal to rho L by A. So rho is constant for a material. It is material property. Okay, and L, change in L is given, but change in area is not given. So आपको इस फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि इसमें सिर्फ लेंथ की डिपेंडेंस रह जाए. तो कोई वायर है अगर हमारे पास, सपोज सिलेंड्रिकल वायर इज देयर, this is area of cross section and this is the length of the wire. What is its volume? Volume of cylinder? Okay, 21%. Okay, let's see. So this is area of cross section, this is length. What is volume of the cylinder? Area of cross section into length. That means volume is constant. So volume is constant, we can write area as V by L. So we will modify this formula. Rho L V by L. That means L square. Now this rho resistivity is constant for a material and volume is also constant. That means resistance is directly proportional to L square. Okay, if new length is L plus, how much change is there? 10%. L plus 10%, that means 10 by 100. L, that means L plus 0.1 L, that means 1.1 L. New length is 1.1 into initial length. So what is the change in resistance? What is new resistance? New resistance is proportional to 1.1, or firstly I can write here L prime square. Okay, so that means this is proportional to 1.1 L square. That is the first equation. That is the second equation. So find R prime from here. What is R prime in the terms of R? And then you should find the percentage increase in electrical resistance. What is the percentage increase? That is R prime minus R by R into 100. Which option is correct? Solve it and tell me. Yes, good. C option. C option is the correct option. Any other? All are getting C option? This is an important type question. Okay.
Now we will study the behavior of electrons in a conductor in the presence of electric field. So हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था. तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स के क्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैंने बोला था ड्रिफ्ट करते हैं, नॉट मूव करते हैं. ओके, मैंने ड्रिफ्ट क्यों बोला था, अब वो डिस्कस करेंगे हम कि क्या बिहेवियर होता है. तो सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, मतलब यहाँ पे सपोज पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम positive potential towards negative potential. So electric field is having this direction. So electrons are experiencing force in the opposite direction. So they will drift in the opposite direction of electric field. तो electric field की presence में कितना force experience करेंगे? We know that what is force, that is Q into electric field. So charge on electron is minus E. So that is the force experienced by the electron. And what is the acceleration of electrons? So we know the force. What is acceleration? That is force divided by mass, because force is mass into acceleration. So acceleration is force divided by mass of electron. So that is the acceleration of electron in the opposite direction of electric field. Okay, minus E is the charge and m is the mass of the electron. Now, that is the pictorial representation of drift of electron. I will explain it. So suppose when there is no electric field, जब कोई electric field नहीं है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो ये है, ब्लू लाइन ये है. तो थर्मल एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है, तो वो जिगजैग मोशन कर रहा है. ओके, जिगजैग मोशन इन एनी रैंडम डायरेक्शन. कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रैंडम है. ये हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो रैंडम है, किसी भी डायरेक्शन में. तो किसी भी डायरेक्शन में वो ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है, जो कि ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है. अब क्या हुआ, वी हैव अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट हैपन्स, electron will experience some force in the opposite direction of electric field and it will drift. What is the meaning of drift? That drift, it is having thermal energy, it is having velocity due to thermal energy, but due to applied electric field its path will be little shifted in the opposite direction of electric field. जो ये आपको डॉटेड दिख रहा है, तो आप देख सकते हो ये A से लेके यहाँ तक ब्लू लाइन यहाँ पे है और ये डॉटेड लाइन थोड़ी सी शिफ्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये शिफ्ट किसकी वजह से आया? दैट शिफ्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो वो शिफ्ट करा उसका थोड़ा सा पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसने ड्रिफ्ट करा थोड़ा सा. ठीक है, आपको कार की ड्रिफ्ट का पता होगा, कार ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हल्का सा साइड पे लेके जाते हैं. ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन, उसके पास खुद की वेलोसिटी है थर्मल एनर्जी की वजह से, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है इधर वाली साइड. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या कर रही है, उसकी थर्मल जो वेलोसिटी है उस पर सुपर इम्पोज कर रही है, उसको थोड़ा सा इधर वाली साइड लेके जा रही है. एक्चुअल पाथ उसका ये था, हालांकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एज कंपेयर टू उसकी जो थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी है उसके पास, ठीक है, जो रैंडम डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है. तो वो उसको सिर्फ जस्ट उसके पाथ को थोड़ा सा शिफ्ट कर रही है, ना कि उसको कंप्लीटली मूव कर रही है कि हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना मोशन जो जिगजैग है वो छोड़ के एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएगा. नो, दैट इज नॉट द केस. वो उसी पैटर्न में चलेगा, रैंडम मोशन है, पर अब वो रैंडम मोशन उसका जो है एक साइड पे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा प्रिफरेबल हो गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. Okay, so a slight drift in the direction opposite to electric field is visible in the diagram.
सो वेलोसिटी वी आई, सपोज हमारे पास क्या हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। सपोज यहाँ पे एक फर्स्ट कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन का, अब उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमें पता नहीं है। इन एनी रैंडम डायरेक्शन इट कैन मूव। सपोज यहाँ पे सेकंड कोलिजन हुआ, अब हमें पता नहीं उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन सपोज इधर है। अब यहाँ पे थर्ड कोलिजन हुआ, यहाँ पे फोर्थ कोलिजन, एंड दिस इट विल गो ऑन। अब क्या हो रहा है, तो हमारे पास क्या है, सपोज वी आई है। अब सपोज उसका फर्स्ट इस यहाँ पे कोलिजन हुआ फर्स्ट पॉइंट पे, तो फर्स्ट पॉइंट के कोलिजन के जस्ट बाद, कोलिजन के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास, स्मॉल वी आई। स्मॉल वी आई इज द वेलोसिटी, दैट इज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अब उसकी रैंडम वेलोसिटी है, तो जैसे ही कोलिजन हुआ फर्स्ट पे, तो अब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रैंडम है, बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है, उसकी वजह से क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड, वो एक साइड पे ड्रिफ्ट होगा थोड़ा सा, तो अब कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो किसी टी आई टाइम के बाद, सपोज टी आई टाइम के बाद अगर हम देखना चाहें कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किसी टी आई टाइम के बाद अगर हम देखना चाहें कि व्हाट इज द वेलोसिटी, दैट इज कैपिटल वी आई इक्वल टू स्मॉल वी आई प्लस ए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज e by m, acceleration. So that is the velocity vi after some time ti. If ti time has elapsed, so what is the velocity of electron? So ये आ जाती है हमारे पास। अब यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, अब देखो जो एक कोलिशन हुआ, आप इस डायग्राम से देख सकते हो, फर्स्ट कोलिशन के बाद सेकंड कोलिशन हुआ, जल्दी हो गया। सेकंड के बाद थर्ड कोलिशन हुआ, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। थर्ड के बाद फोर्थ कोलिशन बहुत जल्दी हो गया। तो ये जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसके दो कोलिशंस के बीच का टाइम जो है फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक कोलिशन के बाद जस्ट बाद दूसरा कोलिशन हो गया, या दूसरे कोलिशन के बाद तीसरा कोलिशन थोड़ा टाइम लेके हुआ, तो वो टाइम जो है वो फिक्स्ड नहीं है। जो टी आई है दैट इज नॉट फिक्स्ड। और जो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो भी हर टाइम क्या है, किसी रैंडम डायरेक्शन में है। और हमने ये देखा था कि वेलोसिटी जो है उसकी रैंडम डायरेक्शन में है, तो अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसका एवरेज निकालें, इसका इनिशियल वेलोसिटी इसका जिसकी रैंडम डायरेक्शन है कोलिजन के बाद, इसका अगर एवरेज देखें तो एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, बिकॉज इट इज इन ऑल डायरेक्शंस इन एनी रैंडम डायरेक्शन फॉर एनी इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट की तरफ है तो उस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे, कुछ अप कुछ डाउन, तो एवरेज क्या है, 0 है। और सपोज ये जो टी आई टाइम है, हमने बोला ना कि दो कोलिशंस के बीच का टाइम भी फिक्स नहीं है, तो सभी ही जो इलेक्ट्रॉन्स कोलिशन कर रहे हैं, तो हम उस सभी के जो टाइम है दो कोलिशंस के बीच, उन सभी टाइम्स का एवरेज ले लेते हैं, और वो हमारे पास इसका एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज टाउ, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। It is known as average time between any two successive collisions. That is tau, relaxation time. And what is that average velocity? अब हर बार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोलिजन होने के बाद वो एक्सेलरेट करेगा, फिर से उसका कोलिजन होगा, वो अपनी वेलोसिटी लूज करेगा, अगेन उसकी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, अगेन एक्सेलरेट होगा, अगेन वेलोसिटी अपनी लूज कर देगा। तो अगेन एक्सेलरेट होगा, अगेन लूज कर देगा अपना एक्सेलरेशन, तो उसकी वजह से हम वेलोसिटी जो हमारे पास आती है, ठीक है, वो भी हमारे पास एवरेज आ जाती है, और इसके एवरेज को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज 0 माइनस e by m tau, and that is minus e tau by, that is the expression for drift velocity. Clear? Any doubt in it?
That is the expression for drift velocity. Any doubt? No doubt? Okay. Okay, so now we will see the expression for drift velocity and relation between current and drift velocity, on which we are going to do some questions also. So drift causes net transport of charges across the areas perpendicular to E. So due to that drift velocity and due to that drift of electron, charges are moving or charges are transporting across the area perpendicular to electric field. That means across the area of cross section. तो अगर सपोज हम एक प्लेन कंसीडर कर लें, हमारे पास ए प्लेन है, ठीक है, जो कि कंडक्टर के इनसाइड है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कहीं मैं कंसीडर कर लेता हूँ इसको, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है. तो हमारे पास सपोज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इलेक्ट्रॉन ने, वो हम देखना चाहेंगे. तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो हमने देखी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा. सपोज हमारे पास टाइम इंटरवल है, ठीक है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, इन्फिनिटेसिमल, दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, डेल्टा टी है हमारे पास. उस टाइम में कितना डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर लेगा, दैट इज डेल्टा एक्स, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है, तो एक स्मॉल सी डेरिवेशन है ये. तो हमारे पास सपोज एन इज नंबर डेंसिटी, इट इज नोन एज नंबर डेंसिटी, that is number of electrons per unit volume. We have mass density. What is mass density? Mass upon volume. So number density is number upon volume, number of electrons per unit volume. Okay, so that we are going to define here. So number of electrons, so how many number of electrons are there? If n is the number of electrons per unit volume, so for a given volume, what are the number of electrons? That is n into volume. Okay, so what is the volume? Suppose here, यहाँ पे suppose हमारे पास area of cross section था, that is the area of cross section, और delta x, तो ये वाला जो दिया हुआ है, वैसे तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, पर उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिया हुआ है कि दैट इज डेल्टा एक्स, दैट इज द डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी. तो कितना वॉल्यूम आ गया हमारे पास, कितना वॉल्यूम जो है उन्होंने कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स ने, ये पूरा इसका वॉल्यूम, इस इतना कंडक्टर का वॉल्यूम, एंड दैट इज ए इंटू डेल्टा एक्स. ओके, सो वॉल्यूम इज ए इंटू डेल्टा एक्स. So that is the volume covered. And how many electrons are there in this volume? That is n into volume, n into delta x. N is the number of electrons per unit volume, multiply by volume will give number of electrons in that volume. So that are the number of electrons in that volume, and delta x we can write Vd delta t. So number of electrons are n Vd. So Vd mod, that means we are taking only magnitude of velocity, not its vector form, delta t a. Okay, and we know for each electron, and each electron carries minus e charge, so total charge transported across this area of cross section in time delta t, how much total charge transported, that is delta q equal to minus ne, that is the number of electrons, and on one electron minus e is the charge. How much charge is transported? That means number of electrons multiplied by minus e, that is delta q prime equal to minus NEA Vd delta t. That is the total charge transported in the opposite direction of electric field. And if we are considering in the direction of electric field, if electrons are moving in the, suppose this is the direction of electric field and electrons are moving in the opposite direction of electric field, so that is the charge, that is transported in the opposite direction of electric field. If we want to find the charge transported in the same direction as electric field, तो अगर हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट इन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके,
तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो हो रहा है, बस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम, दैट इज प्लस NEA/VD डेल्टा टी। ओके, अब हम अगर करंट फाइंड करना चाहें तो व्हाट इज करंट, दैट इज डेल्टा Q by delta T, that is the current. From here we can write delta Q equal to I delta T. So this expression can be modified to I delta T equal to NEA/VD delta T. So from here delta T and delta T would be cancelled out and we will get I equal to NEA/VD. This is very important expression, relation between drift velocity and current. We are going to use it in a question. We'll do after 5 minutes. Okay. I equal to NEA/VD. That is the relation between current and drift velocity. Okay. So from here, now what we can write, we can put, now again we have come to this expression I delta T equal to NEA/VD delta T. So from here we can put the formula for VD, that is E, if we are considering the magnitude. So consider the magnitude of electric field, tau by M. You can write magnitude directly also without any vector sign and mod like this. So that is the expression for drift velocity. So we'll put here in this expression. So I delta T will become E square A upon M tau N delta T E. Now there is a relation between current and current density. That is, what is current density? Current per unit area. That is current density. So from here we can write current as J into A. So from here J A delta T equal to E square A by M tau N delta T electric field. So from here we can cancel out area and delta T. So we will get J equal to N E square by M tau E. And in vector form also we can write. And we have seen the vector form of Ohm's law, that is J equal to sigma E. That sigma is equal to N E square tau by M. From here. Current density, J is parallel to electric field E. So J is equal to N E square tau by M E. This is the expression. Okay, and we know J is equal to, according to vector form of Ohm's law, from here sigma is equal to this conductivity. Conductivity is a measure that some conductor, how easily a conductor is allowing electric current to pass through. Okay, conductivity. So resistivity is reciprocal to it. That means 1 by sigma. So we can write resistivity as M upon N E square tau. That is for resistivity, that is for conductivity. So questions are based on this. We will see which type of questions. Have you any doubt in this expression? Do you have any doubt? Here is the question. A steady current flows. Steady current means constant current. With respect to time, current is not changing. A steady current flows through a metallic conductor of non-uniform cross section along the length of the conductor from the narrow end to the wide end.
So current is flowing from narrow end to the wide end. How do the current density J and the drift velocity Vd of the electron change? So we have the expression I equal to NE VDA. Use this expression. Use this expression and tell me which option is correct. We have to find that current density and drift velocity, how they will change if current is flowing through narrow end to the wide end, and current is steady, that means it is constant over time. Also we have the expression J is equal to I upon A. Which option is correct? Which option? Okay, B option. Any other option from any other school? Okay. So from here, so current is flowing through narrow end to wide end. That means area of cross section is increasing as we move from narrow end towards wide end. Area of cross section is increasing. Okay, from this expression, Vd is equal to I upon NEA. I is steady, current is constant over time. N, for a given metallic conductor, it is also not changing very much. It is nearly constant. E is constant and area is increasing. That means Vd will decrease. Okay, and from this expression J equal to I upon A, if area is increasing, current is constant, so J is decreasing. So both drift velocity and current density will decrease. Clear? Why you are silent so much today? The electric field applied across a copper wire is doubled while maintaining constant temperature. So what happens to the mobility? Okay, we haven't discussed mobility yet, so let's discuss mobility first. So what is mobility of charge carriers? So mobility, that is represented by mu, is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Okay, it tells us how fast any charge particle will move under the applied electric field, or per unit electric field, how much drift velocity is there for any charge particle. So mobility is the magnitude of drift velocity per unit electric field. It is represented by drift velocity per unit electric field. Its unit is meter square per volt second, and its practical unit is centimeter square per volt second. Its SI unit is meter square. So Vd, this is having unit meter per second, and electric field is volt per meter. Electric field is having unit Newton per coulomb, another unit is volt per meter. So meter square per volt second, or practical unit is this. And also you are given with conversion. 1 meter square per volt second is equal to 10 raised to the power 4 centimeter square, and mobility is always positive. Okay, also we have the expression for drift velocity, and drift velocity is given as E tau by m. So put this expression here, what you will get?
So putting this expression, electric field would cancel out. So you will get E tau by m. So that is the another expression for mobility. And tau is the average collision time, which is known as relaxation time, average time between two collisions. Clear? Now we'll do that question. The electric field applied across copper wire. So mobility is E tau by m. And drift velocity is given by E tau by m. So electric field applied across copper wire is doubled while maintaining a constant temperature. Okay, what happens to the mobility and the drift velocity of the free electrons? Okay, so tau relaxation time depends on temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के पास और ज़्यादा थर्मल एनर्जी आ जाएगी, वो और उनके कोलिशंस जो होंगे और ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो टाइम जो होगा दो कोलिशंस के बीच का वो कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम. बट इन क्वेश्चन दे हैव सेड constant temperature is maintained. That means tau will not change. And electric field is doubled. So what happens to mobility and drift velocity? That is homework for you. Okay, tell me tomorrow. So there's time for your next class. This is all about today. Thank you very much. See you tomorrow.